Good morning, students. How are you all? Fine. So now let's see our today's work. Today, this is our English reader book. As you can see, this is our English reader book, and ma'am has opened page number 28. Now see, what do we have to do? Wow, so many words are there. Can you look this? So many words. And one thing is that each word has OU letters. Did you notice? Each word: HOUSE house, STOUT stot, POUCH potch, COUNT cont, MOUNTAIN mountain. So each word of this page has OU letters. So this is our today's work. What we have to do? Say OU as in mouse. Mouse. OU. Ow. Oh. Okay. Mouse. OU. Ow sounds. House. How. How. Ow. Ow. Ow sound is coming with OU. Pouch. Paw. Paw. OU. Aw. Aw sound comes with OU. OU से O sound आता है ना? Now see. House. HOUSE house. Mouse. MOUSE mouse. Blouse. BLOUSE blouse. And these three words are rhyming words too. House, mouse, blouse. House, mouse, blouse. So these are rhyming words also. Out. Stout. Shout. Out. Stout. Shout. So these three are also rhyming words. OUT out. STOUT stout. SHOUT shout. Stout means motor, है ना? Motor. Stout shout. Ouch. Ouch. OUCH ouch. अचानक से हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द है ना? जैसे चलते चलते अगर हम स्लिप कर जाए, हम बोलते आउच. हमने ग्लास पकड़ा हो, हमारे हाथ से वो ग्लास गिर जाए, आउच, है ना? आउच. काउच. काउच अ काइंड ऑफ सोफ़ा, है ना? जिसके साइड में, जैसे ये जो मैम ने देखा रखा हुआ है सोफ़ा मैम के पास है, इसके साइड में ये हैंडल है ना? पर काउच ऐसा सोफ़ा होता है जिस पे हैंडल नहीं होता है, वो सिर्फ बैठने वाला ही होता है. ओके, तो काउच. And pouch. Pouch means a bag. This is pouch. Count. Count means गिनना. 1 2 3 4 5 6 8 7 missing है. Count. गिनो. Proud. घमंड. Loud. जोर से. Found. Mount. Hound. Sound. Round. Ground, around. These are rhyming words. इसमें ना सिर्फ आपको OU साउंड वर्ड्स मिल रहे हैं, बल्कि राइमिंग वर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं. फाउंड, माउंड, हाउंड, साउंड, राउंड, ग्राउंड, अराउंड. OU. बाउंस. बाउंस मीन्स बाउंस, उछलना, है ना? बाउंस. Mountain. Fountain. This is fountain. ये निकल रहा है ना? Fountain. Fountain. Mountain. So आज के क्लास में आपने क्या सीखा? OU sound words and rhyming words also. Okay. Now this is our class work. अब आपको वर्क होमवर्क क्या करना है?
you will note all these OU sound words in your copy. First of all, you will put date on your copy and write the topic, say OU as in mouse. और उसके बाद ये सारे वर्ड्स आप 1 by 1 कर अपनी कॉपी में नोट करेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.